Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep YouTube channel. I'm Ashish Bhargav and welcome to another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And in this newspaper analysis we discuss about all the important news that would be very essential for your exam. Majorly we discuss about the Hindu and Indian Express, as we know that this is a very prominent newspaper. Most of the news that in your exam, most of the current affairs question that fetch from the two newspaper. What exactly we cover in daily newspaper analysis? We cover the news that is very important for the national importance, international importance, economy based news, sports based news, science and tech, person in news, summits and conference. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict and amendments or any bills, which is very important, especially for the law entrance exam. And we also discuss about state initiative, which is also important. And as we know that newspaper playing a very vital role in your exam, and here is the quote of the day. So if your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. And to inculcate this thought process, what exactly you need to develop to the temperament to read the newspaper. So every day may not be good, but there is something good in every day. And just one small positive thought in the morning that can change your whole day. That is quote of the Dalai Lama. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And we have taken initiative questions of the day. So at the end of the session, we'll ask to you 5 questions that will be gives you the immense idea like what kind of question that can be framed in your exam on the basis of current affairs, right? And here is the very first news talking about biocomputers. Please let me know everyone here, like if my voice is audible, if I am visible and audible to each and everyone here. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. So here is the very first news. I told you that about biocomputers. So as we know that the biocomputers is recently initiated by the Johns Hopkins University. So scientists from Johns Hopkins University recently outlined a plan for a potentially revolutionary new area of research called organoid intelligence, which aims to create biocomputers. So the brain culture that is grown in the lab are coupled to real world sensors and input-output device. How the brain is working, so basically the biocomputers will define the how brain will work, right? And we can say that the scientists expect the technology to harness the processing power of the brain and understand the biological basis of human cognition, learning, various neurological disorder as well. So what is the new biocomputers is? So JHU, which is called Johns Hopkins University, this Johns Hopkins University ने research किया the scheme will combine brain organoids with modern computing method to create biocomputers. Then what exactly is, we can say, brain organoid? If you can think about the basic nitty-gritty of the biocomputers, so we can say that, so organoid intelligence. So what exactly is organoid is, we will see in this picture. So here is artificial intelligence and machine learning. You will using this one, big data management here. Here we can say this one is a brain organoid. This one is a probe. So 3D culture system that will optimize for organoid scalability, durability and learning via culture condition and cell enrichment. And one more thing that we can see that this will work, output is electrophysiological recording, fluorescence and confront microscopy. Inputs is that electric signals that will work, that how the brain will function about the cognitive learning, how the brain will function about the chemical perfection and optogenetics. And we can say that the organoid intelligence, like artificial intelligence, which is AI, is an area of study to create independent decision making units called using organoids, which means that organoid intelligence जो है basically एक AI tools बनाया हमने that will create independent decision making units called, that is जिसे हम कहते हैं organoids. So brain organoids are 3D culture of brain tissues prepared in the lab using human stem cells. So these capture many structural and functional features of developing human brain, and the scientists ultimately aim to create biocomputers which are brain culture grown in the lab and couple the real world sensors and input output devices.
What are the uses of this one? So these biocomputers like human brains that can be used for complex information processing, and these organoids that को हम use कर सकते हैं that can reveal the biological basis of human cognition, learning and memory, and they can help also in drug development and decoding the pathology of degenerative disease such as Parkinson's disease and microphilia. So basically जो हमारा biocomputers है, the main purpose is to research work we can say also. Then how do we study the brain? तो आपको पता है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने ट्रांसप्लांटेड दीज ह्यूमन ब्रेन्स ऑर्गेनॉइड कल्चर्स इनटू रैट के ब्रेन्स पे सबसे पहले रिसर्च किया, राइट, जहाँ पे उन्होंने फॉर्म किया कनेक्शंस विद द रैट ब्रेन विच इन टर्न प्रोवाइडेड सर्कुलेटिंग ब्लड के ब्लड वेसल्स को, एंड सिंस द ऑर्गेनॉइड्स हैड बीन ट्रांसप्लांटेड टू द विजुअल सिस्टम व्हेन द साइंटिस्ट शो द एक्सपेरिमेंटल रैट्स इज लाइट फ्लैश, राइट. सो यहाँ पे थॉमस हॉर्टिंग जो थे प्रोफेसर ऑफ एविडेंस बेस्ड टॉक्सिकोलॉजी एट JHU विच इज़ कॉल्ड जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना सबसे पहले स्टार्ट किया था. एंड द चैलेंज इज नाउ टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो वी होप टू अचीव दिस विद इन 1 to 2 years, ऐसा इनका कहना है. नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन रेगुलेटिंग ऑनलाइन स्केल ऑफ ड्रग इन इंडिया. सो वाई इज द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वी कैन से All India Organization of Chemists and Druggists threatening a countrywide agitation against e-pharmacies? And how have online drug delivery stores taken up a large share of the market? Will the Ministry of Health ban of e-pharmacies? Not at all. So देखते हैं इसमें exactly क्या nitty-gritty है इसके बारे में, and one thing that will थिंक अबाउट कि इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए. रिसेंटली क्या हुआ था, इसके पीछे आप बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करो कि लाइक फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पुल्ड अप किया था एटलीस्ट 20 कंपनीज़ को, इंक्लूडिंग इसमें टाटा IMG भी है, फ्लिपकार्ट, अपोलो फार्मेसी, अमेजॉन, रिलायंस, नेटमेट बाय इशूइंग अ शोकेस नोटिस फॉर सेलिंग मेडिसिन ऑनलाइन. दिस हैपेंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD. तो AIOCD ने जब इस्टेब्लिश किया, उनका मेन काम था कि जब ऑनलाइन डिलीवरी होती है तो दैट मीन्स जो बेसिकली जो ड्रग जनरल एंड DGCI जो है हमारा, वो उसको चेक नहीं कर पाती कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन, हु इज़ टेकिंग दिस मेडिसिन. बिकॉज मेडिसिन अगर आप ऑनलाइन देते हो, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे जो ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल वो इंसोमेनिया की है, कोई सोने की दवाई जो है, मतलब सोने की दवाई विच में जो ज़्यादा जिससे आप नींद आती है, जो ड्रग्स बेसिकली वैलिड नहीं है बिलो 18 ईयर्स के लिए, वो कौन मंगवा रहा है, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है. जब यहाँ पे AIOCD को इस्टेब्लिश किया गया, विच इज़ कॉल्ड वी कैन से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, सो इज दैट इज़ वी कैन से एक पावरफुल लॉबी है. अबाउट ओवर 12 lakhs फार्मासिस्ट जो है थ्रेटन टू लॉन्च अ कंट्री वाइड एजिटेशन. इफ गवर्नमेंट डिड नॉट एक्ट, हेल्थ मिनिस्टर ने मनसुख मांडविया ने क्लोज डोर मीटिंग विद द सीनियर ऑफिशियल्स के साथ किया उन्होंने. सो इज बैनिंग ई फार्मेसीज अ वाइबल ऑप्शंस? सो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या मेंशन है. बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अडॉप्ट किया ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड अप्रोच टुवर्ड्स द लाइन फार्मेसीज. इसको याद रखना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड. अभी क्या है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन से आपसे ऐसे पूछेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQ दैट ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हाट इज अ टेक इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो आंसर वुड बी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट. सो बच्चे क्वेश्चंस आपको ऐसे फ्रेम होते हैं एग्जाम में. तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड अप्रोच टुवर्ड्स ऑन ऑनलाइन फार्मेसी. सो द अक्यूट नीड फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ड्रग वाज फेल्ड ड्यूरिंग COVID-19. सो वो ईयर तो कौन सा था हमारा, ईयर ऑफ 2020 marked a watershed moment for the growth of e-pharmaceutical of the Ministry of Home Affairs ने issued के orders then continue to operate. So it saw nearly 8.8 million households using home delivery service during lockdown. So उसके बाद से इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई गई थी. बाद में क्या हुआ, the draft e-pharmacy rules जो है that was floated by the Ministry of Health in 2018, और ये जो रूल्स था इसमें फाइनलाइज किया गया. पब्लिक कमेंट्स वर टेकन फॉर द कंसिडरेशन. They were almost on the brink of being notified, but the proposal was abruptly, you can say, showed into the cold storage. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो e-pharmacy है players is now open capital intensive brick and mortar storage until March 2021. Reliance had opened 114 pharmacies inside, we can say, Smart Point
grocery stores. So it plans to open 2000 more outlets. Apollo Pharmacy ने 4000 stores को open किया. So basically यहाँ पे जब दोनों ई pharmacies हैं, offline retail pharmacies हैं, they have realized that in the climate where drug delivery is driven by a consumer, sometimes it is a futile to stick to any one way of doing business. So this is the main crux of the article. इसमें एक लाइन देखी होगी आपने कि इसमें बात की गई है PLI स्कीम्स के बारे में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव. अब देखो यहाँ पे मेंशन की है PLI स्कीम्स के बारे में. तो व्हाट एग्जैक्टली इज PLI स्कीम्स इज. अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ पे PLI स्कीम्स क्या होती है. सो PLI स्कीम्स क्या होती है, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स होती है. इसको लॉन्च किया गया मार्च 2022 में. दैट वाज लॉन्च इन मार्च 2020 में. सो potential to boost India's manufacturing and export. Central government introduced किया production link incentive schemes in March 2020 to make India competitive players in global markets and boost domestic manufacturing and exports. So PLI scheme, that is the main aim to give companies incentives or incremental sales of product manufacturing domestic units. This will somehow, we can say, strengthen the India's economy as well. So the scheme invites foreign companies to set up units in India. However, it also aims to encourage local companies to set up or expand existing manufacturing units that generate more employment and reduce the country's reliance on imports. Here we can see is, again, we can talk about the new abnormal global institution consensus are fraying under pressure from protectionism. So, what is the main article is talking about? So, the main crux is the article of this, like the clamor of deglobalization and protectionism has reached a crescendo in recent times. So while in natural for countries or priorities their interest and environment of growing distrust and reactionary policies, we can say that has to be action that is worrying. तो यहाँ पे जो एक आत्मनिर्भर भारत which is called self-reliant India that has kept import tariffs को हाई किया. अब इम्पोर्ट टैरिफ्स को आपने हाई किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाहर से कंट्री से सामान आने के चांसेस बहुत कम हो गए. तो दिस फर्दर फ्यूल्स द हाई कॉस्ट इकोनॉमी बिसाइड ब्रिंगिंग इन प्रोडक्शन इन एफिशिएंसीज. एंड द PLI स्कीम्स को जो लॉन्च किया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव that has to be launched because of the reason that should be, you can so the existing PLI scheme should be critically reviewed and its objective spelled out. तो जो भी इंडस्ट्रीज है, एनी इंडस्ट्रीज इन विच इंडिया लैक्स इन बेसिक ग्लोबल कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ whose survival without government support is doubtful in the medium term should not be considered under this scheme. इसमें लिंक में ये मेंशन की गई है कि लाइक यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं आर टेकिंग कन्फ्रंट इन इन्फ्लेशन एबिंग. CPI inflation has not come down to 4%, what is the RBI target in hurry. So basically जो इन्फ्लेशन जो क्वेस्ट हमारा आत्मनिर्भर हैज़ केप्ट इम्पोर्ट टैरिफ हाइज. और इम्पोर्ट के टैरिफ्स अगर बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, बाहर के कंट्री से आप सामान नहीं मंगवाओगे. तो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि करंट अकाउंट डेफिशिट. सो करंट अकाउंट डेफिशिट का मतलब होता है जब कंट्री से आप इम्पोर्ट ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट उसके कंपेरेटिव बहुत कम होती है. ठीक है, दैट इज़ नॉट टू बी अ करंट अकाउंट डेफिशिट. सो ऑन क्वेस्ट ऑफ वी कैन से आत्मनिर्भर हैज़ केप्ट इम्पोर्ट टैरिफ साइज. This further fuels the high cost economy besides bringing the production inefficiencies. जो और आपके इसमें PLI स्कीम्स थी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की मार्च 2022 में. दैट वाज लॉन्च इन मार्च 2020 में लॉन्च की. बट द मेन पर्पस ऑफ PLI schemes to the boost of the import and export, right? So the existing PLI scheme should be critically reviewed and its objective spelled out. Any industry in which India lacks, that is the basic global comparative advantage of whose survival without government support is doubtful in the medium term, should not be considered under the scheme. जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश ओवर decades through trust, multilateral institution and mutually beneficial and well, we can say intention global negotiation in various fora is under the cloud. और जो थीम है इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी का, दैट इज कॉल्ड वासुदेव कुटुंब, विच इज वी कैन से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. तो ये बहुत बड़ी आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस में वी हैव कवर्ड द वासुदेव कुटुंब. दैट मीन्स काइंड ऑफ वी आर कॉस्मोपॉलिटन, सो वी बिलीव दैट हियर इज अ वन अर्थ, one family and one future that frames a difficult task.
And we can say that the good news is that the major actors involved is on responsible for global cares are members of this group and will come together as a discussion. And we can say the bad news that their stance on the many issues is entrenched, and the recently concluded meeting of G20 finance minister ending with the we can say communique is not a good sign. Now is talking about how global is India's economy. In this article, we have to understand that our economy is that, like, our economy is intrinsically or domestically driven, but a global economy may hit some sectors. So there is now a consensus on India emerging as the second fastest growing economy for the second successive year in financial year 2024, despite the slowdown in the West. So does that mean that India's growth path is largely, you can say, decoupled from the rest of the world? When the Make in India campaign was launched, the objective was to, foster export promotion and import substitution. That was implicit goal. Now the PLI schemes that was launched in March 2020, around 14 sectors to making certain quantum. The government ने PLI schemes को launch करने का purpose क्या था? Production linked incentive को, कि आपको country से बाहर जो भी सामान है उसको आप export करोगे तो आपको उसमें क्या करेंगे, हम उसमें incentives देंगे. तो बहुत इसमें कितने सेक्टर्स थे इसमें एट द टाइम? यहाँ पे 14 सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी है, इसमें आपका ऑटोमोबाइल्स भी है. 14 सेक्टर्स में आपको यहाँ पे PLI स्कीम्स को लॉन्च किया गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में टू बूस्ट द एक्सपोर्ट. सो द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट इफ वी हैव मेड प्रोग्रेस ऑन एक्सपोर्ट, देन देयर शुड बी सम एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ when a part of developed world slims into a recession. Besides, in the globalized world, there could be a, you can say, spillover effects in other areas. So यहाँ पे जो recession है in the West, which means that all the European nations, would also mean that the demand for Indian labor as well as computer related services would come down, and this could affect our balance of payment. So at the other end, ECB and NRI deposits too will get impacted depending on our policy and interest rate. So as we know that export now from a smaller part of GDP, which is perhaps why projection are still 6 to 6.5%. But the flip side is despite policy push, export sectors haven't fared well. जो हमारा रेशियो है विच इज कॉल्ड FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ वी कैन से कम डाउन शार्पली ड्यू टू द यू कैन से नेगेटिव्स विटनेस इन दीज ऑफ 5 years. तो इसमें क्या है, इंटरेस्टिंगली जो NRI डिपॉजिट्स हैं हैव बीन नेगेटिव ऑन द एवरेज बेसिस इन द बोथ ऑफ द पीरियड्स. एंड इसका ये मतलब हुआ कि देयर इज़ नो रीज़न फॉर द डिपेंडेंट ऑन द देम टू सपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू to of balance of payment crisis. And why this data show that India still remains a larger domestic economy, which because domestic economy which means जो आपकी अपनी economy है, और we can say MSME sectors and gig workers, medium sector, micro enterprises and gig workers. So these things we need to find it out while reading this article. Now the next article talking about regulation proposal Rajasthan power lines flouts SC order threatened busted. तो यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके पर जो पावर लाइंस है उसको गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसको प्रपोजल दिया है कि इसको आप जो SC के जो ऑर्डर्स हैं कि इससे क्या जो बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पावर लाइंस फ्रॉम राजस्थान इज सोलर प्रोजेक्ट हैव अ वी कैन सी रेटिंग ऑफ 330 किलोवाट and several such proposed ones are expected to pass through the priority areas. तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसको हटाने के लिए, और हाई टेंशन जो पावर लाइन्स है राजस्थान एंड गुजरात में सोलर प्लांट्स जो हैं दैट इज ऑफन लाइन द फ्लाइट पार्ट ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, सो इफ द रेगुलेशंस कम इनटू इफेक्ट दिस वुड लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और अगर ऐसा होता है इफ this happens, it would be second major species after the Asiatic cheetah to go into extinct in post-independent India. Now moving further, nation secures pact to protect marine life in the high seas. तो इसमें वेरी फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स ने, UN के मेंबर्स ने क्या किया, हैव अग्रीड ऑन द
unified treaty to protect the biodiversity in the high seas. And this treaty agreement concluded the 2 week talks in the New York. इसमें क्या गया, एक फ्रेमवर्क जो था टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द रीजन आउटसाइड नेशनल बाउंड्री वाटर्स नॉन एज द हाई सीज, ठीक है, हैव बीन टू डिस्कशन फॉर मोर देन 20 years. और इस ट्रीटी में हुआ क्या ऐसा, तो दिस ट्रीटी विल क्रिएट अ न्यू बॉडी टू मैनेज कंजर्वेशन ऑफ ओशियन लाइफ एंड एस्टैब्लिश मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन हाई सीज. इट मीन्स जितने भी एक्टिविटीज होंगे प्लान फॉर द हाई सीज नीड टू बी लुक्ड एट थ्रू, नॉट एट विल go through the full assessment. So this treaty will help to knit together the different regional treaties that to be able to address threats and concern across species. Threats and concern for the species. तो ये जो comprehensive protection of endangered species है और ये habitat है, that is we can see now finally possible on more than 40% of Earth's surface. नेक्स्ट वन, चाइना इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%. इससे हमें क्या सीखनी चाहिए इसमें, और इसमें एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. ये इंडिया में कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए हैं हमने इंडिजिनस सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए, एंड डिफेंस सेक्टर्स के लिए हमने अभी जो हमारा बजट था उसमें हमने कितना % खर्च किया, ठीक है. क्योंकि बजट में हमने यहाँ पे $5 billion defense export target है. Defense Ministry has set target to raise India's annual defense export of $5 billion by 2024-2025 from 1.5 billion currently. So यहाँ पे इसमें क्या मेंशन किया गया कि what is the current defense export figure. So गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से दिसंबर 2022 में हमने अभी तक पहुँचे 6,058 करोड़ पे. इंडिया का डिफेंस सेक्टर हैव ग्रोन बाय 3.34% in the past 5 years, and they touched nearly 13,000 crores in the 2020-2022. So the major defense items that has been exported are personal protective items, offshore patrol vessels, AILET helicopters, SU avionics, Bharti radio, coastal surveillance system. Next is away from the spotlight, India hold conference of global intelligence chief. इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है हमारे, अजीत डोभाल. Ajit Doval is a national security advisor. National security advisor ने इसमें बात करी काउंटर टेररिज्म की बात करी, रेडिकलाइजेशन की बात की, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की, डिस्कस एज द राइज इन सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे. सो हमें द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अहेड ऑफ राइजिना डायलॉग इन द, इसके बारे में देखिए कब स्टार्ट की गई थी, 2016 में स्टार्ट की गई थी राइजिना डायलॉग को. ये एक जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक कमिटेड है, इसको स्टार्ट किया गया सिंस 2016 में न्यू दिल्ली. और डायलॉग जो है दैट इज क्रॉस सेक्शनल डिस्कशंस के बारे में बात होती है इसमें. एंड इसमें जो ऑर्गेनाइज करता है हमारा OSORF विच इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, विच इज़ इन द पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर बात करें इसमें हम ORF के बारे में, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 एंड ORF इज एन इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिसन थिंक टैंक पॉलिसी थिंक टैंक विच मीन्स सिमिलर टू वर्क लाइक अ नीति आयोग, विच कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ द हायर पेंशन स्कीम. इसमें क्या यूज़ की गई, बिकॉज long wait of subscriber of the Employee Provident Fund Organization EPFO and those who retired after 1st September 2014. 1st September 2014 से जो रिटायर्ड हुए हैं, सो अप्लाई फॉर द हायर पेंशन फंड. और पेंशन फंड को कौन रेगुलेट करता है यहाँ पे, दैट इज द एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम्स को PFRDA, राइट. तो यहाँ पे जो पेंशन स्कीम्स थे ऑफ 1995 केम टू एन एंड ऑन February 27 को ये ख़त्म हो गया. और जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 4 सितंबर 2014 को अप्लाई कर सकते हैं हायर पेंशन फंड स्कीम्स के लिए. तो जो हमारा प्रेजेंट एक्सरसाइज है यहाँ पे EPFO का, दैट हैज़ टू बी वी कैन से जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि आपका यहाँ पे एक केस था यहाँ पे
EPFO versus Sunil Kumar B case. So the pensionable salary है which represents the average of the last 60 months of the salary that will have to multiply it by the number of contributory years. इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, दैट इज़ नो, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, बट आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि EPFO का यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे मैनेज करता है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स है 995 वो एंड होगी फरवरी 27 को। तो अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ये एक EPFO जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो EPFO जो है ये काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। स्ट्रक्चर क्या है इसका? द एक्ट विल ऑल इट्स स्कीम आर एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्राईपार्टाइट बोर्ड कॉल्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ट्राईपार्टाइट उसमें 3 पर्सन वुड बी इन्वॉल्व। So the board comprises representative of the government, both central and state, employers and employees. और बोर्ड को चेयर कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है दैट इज ऑपरेट 3 स्कीम्स: एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। कवरेज क्या होती है इसकी? सो स्कीम्स ऑफर EPFO कवर इंडियन वर्कर्स एंड इंटरनेशनल वर्कर्स from country with whom the EPFO has signed bilateral agreements, right? So ये जो schemes है that is provision for employee working in the organized sector. Organized मतलब at least he or she have must one social sector schemes, right? So the benefit of the sector schemes can be availed only for the employee has provided a service for at least 20 years. So under the employees Provident fund schemes, both the employers and employee contribute 12% of each of the employees paid towards the employee provident fund under higher pension under EPS. So इसमें जो employees under employees होते हैं that is EPFO, both the employer and employees को contribute करना तो 12% of the each employees, and the employee provident fund organization has issued guidelines to allow a section of its older members to opt the higher pension under the employees pension schemes as per the 4th number 2022 judgment of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी 2022 में? तो SCF failed the employee pension amendment scheme 2014 but extended the time to opt for the new schemes by 4 months. So article 142 the Supreme Court ruling gives EPFO members जो हैं who are availed for the EPS another opportunity over the next 4 months to opt and contribute up to 8.33% of their actual salaries as against 8.33% of the pensionable salary capped to the 15,000 a month toward pension. Now the next article talking about government school needs urgent fixing. So this article talking about local governments and women's collectives should be given a responsibility of primary schools. So basically this article talking about like how the need to be improve the government schools, and according to the annual status of education report 2020 report that is published by the PRATHAM NGO, and so government schools saw a sharp rise in enrollment for the first time in 16 years. और इससे जो हमारी बेसिक लिटरेसी लेवल था और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, दैट हैज़ टू बी ऑल्सो गुड। एंड ASER 2023 कन्फर्म्स करता है बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स गोइंग एवेल एज हैव ऑल कम बैक टू स्कूल्स बट द करेंट education system is failing them. So however it is possible to make learning attractive for children with little efforts, while a lot has been improved to the school on the supply side and Sarv Shiksha Abhiyan. Pattern of violence in Kashmir Valley, this is article we have already discussed. Now it's time to questions of the day. So as we know that questions of the day is very important because it gives you the immense idea like what kind of question that can be framed in your exam, right? So here is the very first question is here. Which one of the following statements regarding the interstate council is correct? So statement first says it is a permanent statutory body, its recommendations are binding in nature, it is headed by Ministry of Home Affairs. None of the above statements are correct. So D is the right answer. So interstate council is a constitutional body to facilitate coordination between states and the center
And the council is a recommendatory body to investigate and discuss subject in which some of all the states or the union government have a common interest. Recommendations are not binding in nature. And Article 263 of the Constitution of India provides for the establishment of an interstate council. It considers recommendation for the better coordination of policy and action and also matters for the general interest of the state. Or the interstate council, it is not a permanent constitutional body for coordination between the states and union government. It can be established at any time. Methane Global Tracker Report is released by which of the following? UNDP, IUCN, WWF and IEA. So obvious answer would be here D option. The International Energy Agency that released the annual Methane Global Tracker Report 2023. The report has come after energy giant Shell BP report profits, and last year the Russia-Ukraine war drove up oil and natural gas price. Consider the following facts. It is called Yamanika Tirtha. It was called the White Pagoda. It is a part of Char Dham pilgrimage, and the above given fact describe which of the following famous temples of India: Sun Temple, Konark, Odisha; Meenakshi Temple, Madurai, Tamil Nadu; Veerbhadra Temple, Lepalakshi, Andhra Pradesh; and Jagannath Temple, Puri, Odisha. So obvious that we are talking about the option D would be the right answer. It was constructed in 12th century King Alvantara Chodanganga Deva of Eastern Ganga dynasty. Jagannath Puri temple is called Yamanika Tirtha, where according to Hindu beliefs, the power of Yama, the god of death, has been nullified in Puri due to the presence of Lord Jagannath. It was called the White Pagoda and is a part of Char Dham pilgrimage, which is Badrinath, Dwarka, Puri and Rameshwara. Fourth one questions about the provision of the 10th schedule in the Constitution of India are made in order to determine the emoluments, allowance, privilege and so on certain constitutional authority, allocate seat in the Rajya Sabha to the states and union territories, determine the criteria related to the disqualification of members of parliament and state legislative and ground of defection, determine the powers, authorities and responsibility of panchayat. So obvious the answer would be which one? C would be the right answer. So we can say that about anti-defection law that was introduced through the 52nd Constitution Amendment Act of 1985, inserted in the 10th schedule of the Indian Constitution. If it lays down the process of disqualification on ground of defection, the presiding officer has the authority to disqualify a member of proven ground of defection. Now the last questions of the day is Nord Stream gas pipeline recently seen in the news runs through Caspian Sea, Mediterranean Sea, Baltic Sea and Black Sea. We have covered many times about Nord Stream gas pipeline. It's connected to Russia and Germany, right? So the answer will be is Baltic Sea. So here we can see that is connected to the Germany, to the Russia, and here we can see nearby the Baltic Sea. So Nord Stream are the Nord Stream 2 pipelines, multi-billion-dollar project to carry natural gas from Russia to Germany through the Baltic Sea. And it is essentially a network of underwater gas pipeline in Europe to supply natural gas from Russia to Germany through the Baltic Sea. और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? That is called 1224 kilometer long Nord Stream pipeline. And this is all about the session, dear student, and happy Holi to each and everyone, and be and safe Holi, and may the colors of Holi fill your life with happiness and positivity. And this is all about the session, dear student, and I wish you a happy Holi once again. And if you are new in this channel, please subscribe our YouTube channel and do not forget to press the bell icon. We'll meet you at 3 p.m. for the deep dive session. We'll meet you in the next class, and if you have any questions, please let me know in the comment section, and we'll meet you in the next session. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care, and once again happy Holi to each and everyone. Thank you.